तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं हमारे रेंज फंक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो ऑन रेंज फंक्शन, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू यूज दिस रेंज फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, राइट? बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड whenever we use range function, we always use with the for loop. So how can we utilize range function? Firstly, we need to know that how can we write for loop, right? So we will discuss for loop in detail in the coming videos. uh, uh, in this video I'm gonna discuss a small part of for loop, right? So I'm writing for loop for, let me take one variable x in, this is our range function, and here we will give the lower limit and upper limit. तो यहाँ पर हम अपना लोअर लिमिट और अपर लिमिट असाइन करेंगे, रेंज फंक्शन के अंदर वैल्यूज को पास करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने पास किया 0,5 and then single colon, right? And here I am printing x. I am printing this variable value x. So what will happen? This range function will generate one sequence in the form of list, right? In the form of list, and this will generate 0, 1, 2, 3 and 4, right? So these values will be generated by the range function and it will be assigned to the x one by one, right? So x की value पहले क्या होगी? x की value पहले होगी 0, then 1, then 2, then 3 and then 4, राइट? सो ये वैल्यू वन बाय वन एक्स को असाइन होंगी और हम वैल्यूज को इस वेरिएबल की वैल्यू एक्स को प्रिंट कर रहे हैं अपने इस कंसोल पर, राइट? सो वी आर यूजिंग स्पाइडर हियर. सो लेट मी राइट दिस कोड ऑन द स्पाइडर. Okay, so what we are going to do, we are going to write for loop. X is a temporary variable, in is a operator, range function we are using, and here I am writing 0,5, right? And then single colon. So let me print this variable x on the screen. Okay, and then execute this program by clicking on this run file button. So you can see here, so what is the output of this variable? 0, 1, 2, 3, 4, right? So range function has generated this sequence of these numbers, right? So we can take many examples. So this is very simple example we have taken. Let me take a few more examples here. Okay, so for example I am writing here 0, 10, right? So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो हम स्टार्टिंग वैल्यू 0, लोअर लिमिट इंक्लूड की गई है सीक्वेंस में, बट अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता. ओके, सो अपर लिमिट विल नॉट बी इंक्लूडेड. लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स हियर. 12, 18, right? So what will happen here? 12, 13, 14, 15, 16 and 17, right? So this will be the output of this range function, because I'm just experimenting here the range function. What will be the output of the range function? So one by one that particular sequence value will be assigned to the x, and then we are printing the x value. So this sequence starting from 12 and going till 17, right? So let me take few more examples. So here we are using the type 1 range function. So let me use here step value. Okay, so we are using here step value. By default step value is 1. Okay, so you can mention here step value. So the output will be 12, 14 and 16. Okay, so 12 से हम शुरू कर रहे हैं. 12 is the lower limit, एंड देन 2 के इंक्रीमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे. और आपको पता है जो अपर लिमिट हमारी अपर लिमिट -1 तक हमको इस सीक्वेंस को चलाना है, यानी 17 तक. सो वी कैन नॉट कंसिडर 17 बिकॉज 16 के बाद 18 आएगा. 18 कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, राइट? बिकॉज upper limit, we cannot include upper limit in the sequence.
right? So we can include here step value as well. So let me take a few more examples. Okay, 5 comma 0 minus 1, right? So here the step value is minus 1, right? So if I execute this program, 5 4 3 2 and 1, right? So these are your these are your sequence values. Okay, so this is the list of values generated by range function. Okay. So as you know that in for loop, this list values we are assigning one by one. You have to take care of this thing. Okay, so let me take few more examples. This is a type 2 where we are giving the step value. Now we can give just number here. Okay, so what is the benefit of just providing one number? So it will start from 0 and going till number minus 1, okay, till 4. So 0 1 2 3 and 4. So this is a range, this is a sequence generated by this particular number 5, right? So starting from 0 till 4. Okay, so let me take many examples here. Range 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so let me take this example, 5 comma 9, 5 6 7 8. By default step value is 1. Okay, you can see here this output 5 6 7 8. This is a sequence generated by range function. And then few more examples we take. 3 comma 9. So this is the another sequence 3 to 8. Let me take another example, 5 comma 15 comma 3, right? So what will be the output? 5 8 11 14. So 3 हमारा स्टेप वैल्यू यहाँ पर है और हम 3 के स्टेप वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने सीक्वेंस जनरेट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर वैल्यू, राइट? अनदर एग्जांपल वी आर टेकिंग 9,3 minus 1. Okay, so 9 8 7 6 5 and 4. Okay, so we are starting from 9 and going till 4 because upper value cannot be included in the sequence, right? Because it is a policy of range function, right? 10 comma 1 comma minus 2. This is another example. You can see here the step value is minus 2 and we are starting from 10 and going till 1, right? But you can see here 10 minus 2 8, 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2. So you can see here यहाँ पर जो स्टेप वैल्यू है वो है -2 का, -2 का, राइट? सो हमारी जो लोअर लिमिट है उसमें -2 माइनस होता चला जा रहा है और हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं? 2 तक, राइट? इसको 2 तक लेके जा रहे हैं. यू गॉट माई पॉइंट गाइस? आप लोगों को ये समझ आ रहा है? सो इट्स वेरी सिंपल. So this is the practical implementation of range function. So we discussed range function without step value. You can see here without step value 1 comma 10. Okay, so this is the without step value example, right? This is the step value example and this is the just number we have to pass here. For example, I am writing here 20. Okay, then 0 to 19 will be the sequence here. Okay, so one thing you have to understand, हमेशा जो बाय डिफॉल्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रेंज फंक्शन फॉलो करता है तो जो स्टेप वैल्यू होगा वो +1 का होगा, राइट? सो अगर मैं इस तरीके से आई एम जस्ट राइटिंग अपर वैल्यू जो हमारी है, जो हमारी लोअर वैल्यू है वो 10 है और अपर वैल्यू अगर हमारी 1 है, देन इट विल क्रिएट empty sequence. So x range function has not generated any sequence. So if we print x, there is nothing on the screen, right? So there is no sequence generated by the range function. You got my point? So this is the practical implementation of range function. आप भी अपने लैपटॉप्स पर और स्पाइडर पर इसे ट्राई कीजिए. Thank you so much.